Hello and welcome to College Dunia Study Abroad. आपका आइडियल चॉइस फॉर ऑल द स्टडी अब्रॉड रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। मैं हूं निधि, योर स्टडी अब्रॉड एक्सपर्ट। आज का हमारा वीडियो इज स्पेशली फॉर दोस्त हु आर प्लानिंग टू गो टू द यूएस फॉर देयर पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज। वी आर प्लानिंग टू टेल यू द एंटायर प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप, जिससे आपका यूएस में मास्टर्स के लिए अप्लाई करने का प्रोसेस बहुत ही सिंपल एंड स्मूथ हो जाएगा। But before we start with the video, if you are new to this channel, then do not forget to subscribe to our channel. Also, do hit the like button on this video. Now let's start with today's topic. आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट हाउ यू कैन परस्यू अ मास्टर्स डिग्री फ्रॉम द यूएस एंड अप्लाई करने के लिए उन सभी जरूरी चीजों के बारे में जो आपको कंसिडर करनी पड़ेगी। In this video, we have talked about things like entrance exams में अप्लाई करने का right time क्या होगा, how to select the university, the documents required, and the entire application timeline. अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि मुझे कौन से एग्जाम्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, GRE और GMAT. There are two major entrance exams to take if you are applying for admissions to masters in the United States, GRE and GMAT. अगर आप MBA या PGDM जैसे किसी कोर्स के लिए बिजनेस स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके लिए GMAT क्लियर करना जरूरी है, बिकॉज यूएस में यूनिवर्सिटीज प्रेफर GMAT फॉर मास्टर्स इन मैनेजमेंट कोर्सेज। मैनेजमेंट के अलावा अगर आप किसी और कोर्स में अप्लाई करना चाहते हैं तो यू कैन गिव द GRE एग्जाम। यू नीड टू प्रिपेयर रियली वेल टू क्लियर दीज एग्जाम्स। बिफोर यू स्टार्ट योर प्रिपरेशन, आप इन एग्जाम्स की एक मॉक टेस्ट ले सकते हैं, जिससे आपको आपकी नॉलेज, आपकी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस का जजमेंट मिल जाए। बेस्ड ऑन द स्कोर्स ऑफ द मॉक टेस्ट आप डिसाइड करें कि प्रिपरेशन के लिए आपको कितना समय लगेगा। सिंस मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स अप्लाई फॉर GRE, यू नीड टू कीप अ टारगेट टू स्कोर हायर इन द एग्जाम्स। अगर आप GMAT के लिए अप्लाई कर रहे हैं, then you should target something around 355. GRE and GMAT के scores are valid for 5 years, so you can take this exam anytime between the first and fourth year of your undergraduate course or after the completion of your course. Best time to take the test is whenever you feel ready and जब आपके ऊपर academics का burden थोड़ा कम हो. The other mandatory exam is the language proficiency exam, TOEFL or the IELTS. इसका score 2 years के लिए ही valid रहता है, so do not take this exam in advance. Apply for them only when you are close to taking admission. Anything above 100 is a good score for TOEFL, and for IELTS, 7.5 is an extremely good score. Shortlisting the university. After taking the exams, the next step is to search and shortlist universities and start filling the admission forms. सारे admission forms सितंबर या अक्टूबर में ओपन हो जाते हैं, so keep checking the website of universities during this period. To shortlist colleges, you can look around for the colleges that interest you. Do not forget to check the details and the eligibility criteria of each university. It is essential कि आप सारी डिटेल्स को अच्छे से पढ़ें and sure हो जाएं कि you have enough scores, qualification and experience to apply for that particular university and also have the highest chances to get into the same university. While shortlisting, you can consider 3 top universities, 3 average universities and 3 such universities where you are confident of getting accepted. It is up to you to choose the number of universities you wish to apply. Another important point over here is in universities में apply करने के लिए आपको अपने GRE और TOEFL के scores officially send करने पड़ते हैं. While registering for the exams, you can submit these scores free of cost to 4 universities. But after you have taken the test, you will have to pay around $20 per college to submit these scores. Documents required. Apply करने के लिए आपको काफी सारे documents की जरूरत होगी, जैसे कि resume, mark sheets, degree certificate, and if you don't have the final degree, then a provisional degree certificate would work. Internship experience, research experience, official TOEFL and GRE scores, recommendation letters, statement of purpose, passport, and so on. WES Evaluation. WES is an evaluation system that is accepted in the US. Most universities in the US are familiar with the Indian evaluation system, the CGPA system out of 10, so WES की requirement आपको नहीं रहेगी. In case you are applying to a university that doesn't accept the CGPA system, then the university will ask you to send all your transcript and a fee amount of $100 to $200 to get the scores converted to the WES system. Once you submit all the documents and fill out the forms, you will have to wait for 1 or 2 months to know if you are selected or not. आपके सिलेक्शन होने के बाद आपको एक्सेप्टेंस लेटर ऑफर किया जाएगा फ्रॉम द यूनिवर्सिटी. Along with the acceptance letter, you will also get instructions about how to get your I-20. You will have to pay $50 to $60 and some service fees of about $200 to receive the I-20 from the university to your home. You will also have to fill your DS-160 form, which will enable you to get your F1 visa. ये सारी formalities complete करने के बाद ही you can go to the embassy, give an interview and get your F1 visa. If you have been accepted in a top university, getting a visa becomes super easy. Get the F1 visa and you're all set to fly to the US for your masters. This is it for today's video. अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हैं या आप हमारे स्टडी अब्रॉड एक्सपर्ट्स को भी कांटेक्ट कर सकते हैं by just clicking on the first link in our description box. चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. Till then, all the best for your preparations and admissions.